क्वालिटीज जो आपके पास होना चाहिए, दैट वी आर डिस्कसिंग. यू हैव टू बी एक्सपीरियंस्ड ऑफ कोर्स. जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा आपको परफेक्शन से आप बोल सकते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द थिंग. नेक्स्ट इज अलॉय कंपोजिशन को भी देखना है, दैट हाउ व्हाट आर द मेटल्स व्हिच आर मिक्स्ड विद द गोल्ड. रबिंग स्टोन का क्वालिटी सही होना चाहिए. सी क्वालिटी, हरा रंग, पीला रंग, मरून कलर, भूरा कलर यानी ब्राउन कलर का भी मार्केट में अवेलेबल है, पर कसौटी का कलर एकदम काला रंग का होना चाहिए. इट हैज टू बी जेट ब्लैक इन कलर. ग्रैन्युअल डिस्पर्शन का मतलब ब्लिस्टर्स. नोट द वर्ड, इट इज कॉल्ड एज ब्लिस्टर्स. चमकने वाला सोना कण बोलते हैं. यानी जब भी कसौटी के ऊपर हम सोना को घिसेंगे, क्या होता है, सोना ऐसे ही ऑलरेडी टोल्ड यू बहुत सॉफ्ट होता है ना. तो जब भी सोना का शुद्धता ज्यादा होता है, इट इज गोइंग टू बी मोर सॉफ्ट. So when you rub this type of high quality gold on the stone, it will break itself and it will just spark itself outside, like disperse होगा. जैसे chalk piece को हम black board में लिखते हैं तो you get some powders, white color powders, right? Same thing when you use this type of high quality gold, and when you rub it on the stone, you also get very small particles, golden particles, which will be scattered. That is called as granular dispersion. इसको हम बोलते हैं blisters. Concentration of acid 70% ही होना चाहिए. दैट 100% को इस्तेमाल मत कीजिए, बिकॉज आपका साइंटिफिक टेक्निक का वैल्यू भी नहीं आएगा, एंड इट इज ऑल्सो वेरी बैड फॉर योर हेल्थ. लाइटनिंग ऑफ द एरिया, सनलाइट इज द बेस्ट. अगर सनलाइट नहीं है तो यू कैन गो फॉर अ वाइट टेबल लैम्प. नेवर यूज yellow table lamp or orange table lamp. When you are sitting for evaluation, it has to be a white bright table lamp. Okay, this is a rubbing stone. देखिए, this is a rubbing stone, that is we call it as कसौटी. कसौटी, काला रंग का कसौटी, थोड़ा सा फ्लैट सरफेस में होना चाहिए. This is the thing which you are going to use for testing rubbing stone. Okay, what are the steps? to 300 rupees तक आपको ये रब स्टोन मिल जाएगा. इट इज नॉट वेरी कॉस्टली ऑल्सो. And very important, what are the things that has to be noted, but which you have to keep in your mind. वैल्यूएशन जब आप जाएंगे, कौन कौन सी चीज को माइंड में रखना चाहिए. फर्स्ट इज, जिस जगह में टांका लगा हुआ है, यू आर नॉट सपोज टू टच दैट एरिया. नो नीड टू टेस्ट, क्योंकि सोना के अलावा वहां पे जस्ता या केडियम भी हो सकता है, सो डोंट यूज दैट. नेक्स्ट इज मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल कर देखना चाहिए. दैट इज बिना कसौटी ऐसे ही डायरेक्टली आप गोल्ड को मैग्नीफाइंग ग्लास को इस्तेमाल कर देखना है. इफ यू आर एबल टू सी सम ब्लैक स्पॉट्स और ब्लैक लाइंस ओवर द गोल्ड, इट मींस इट माइट बी डुप्लीकेट. बिकॉज गोल्ड अगर ओरिजिनल है तो इसके ऊपर काला रंग का स्पॉट्स या जो आइटम आपने के ऊपर कस डाला है, और जो आइटम का कलर आपके हाथ में है और जो निशान का कलर, दोनों कंपेयर करना है. दोनों का कलर सेम होना चाहिए. अगर आइटम का कलर पीला रंग में है और कस का कलर लाल रंग में है, तो दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम है. ओके, इट माइट बी फेक ऑल्सो. सेकेंड, ब्यूटी मस्ट नॉट गेट स्पॉइल्ड. यानी मान लीजिए आपका एक नेकलेस है, नेकलेस के ऊपर एकदम बढ़िया सा एक फूल का डिजाइन है, तो कीप इट इन योर माइंड दैट यू डोंट स्पॉइल द ब्यूटी. यानी ऊपर जो डिजाइन है उसको छोड़कर
बाकी कहीं पे भी आप कस डालकर चेकिंग कर सकते हो. सो सेलेक्ट डिफरेंट एरियाज फॉर डिफरेंट ज्वेलरी. अलग अलग ज्वेलरी के लिए अलग अलग एरियाज होता है. यानी बैंगल के लिए अलग से एरिया. दैट ऑल्सो आई विल डिस्कस विथ यू कि कौन कौन सी ज्वेलरी को काम पे घिसना है, कैसे घिसना है. दैट ऑल्सो आई विल डिस्कस. All these are the rules which you can also go through, but itna important nahi hai. You can just go through those things. Types of gold testing methods: visual inspection, density method, rubbing, acid, and filing. First is visual inspection. Visual